पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे का खैर मकदम करते हैं क्योंकि ये मगरबी एशिया की मुस्लिम रियासतों के ताउन से एक जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम के आगाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहा ईरान ने कभी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं की और ना कभी करेगा। हम एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहते। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला किया। ईरान दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेगा और मज़ीद मजबूत होगा। Iran welcomes the defensive pact between the two brotherly Muslim countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, as a beginning for a comprehensive regional security system with the cooperation of the Muslim states of West Asia in the political, security and defense domains. I hereby declare once more before this assembly that Iran has never sought and will never seek to build a nuclear bomb. 3 European states having failed through a decade of bad faith and thereafter by supporting military aggression to bring the proud people of Iran to their knees at the behest of the United States of America, sought by means of pressure, coercion, imposition and manifest abuse to reinstate against Iran the Security Council resolutions that had already been terminated. Finally, Iran condemns the criminal aggression of the Israeli regime against Qatar. कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के ऑपरेशनल ढांचे में अहम तब्दीलियां, 2 की जगह 3 रीजन्स में तकसीम कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान और सक्खर के नाम से 2 नए जोन्स भी बना दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, क्या वजह बनी इसकी? जी बिल्कुल, FIA का जो ये ढांचा है, जब से FIA को बनाया गया था उस वक्त से लेकर अब तक ये इसी स्ट्रक्चर में था। अब इसको 3 रीजन में तकसीम किया गया है ताकि कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सके और ह्यूमन स्मगलिंग की जो कार्रवाइयां उस पर काबू पाया जा सके। अब इससे कबल जो था FIA नॉर्थ में और साउथ रीजन कायम थे, जबकि नॉर्थ रीजन में इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और कोहाट जोन जो थे वो सिर्फ इस्लामाबाद में काउंट किए जाते थे। सेंट्रल रीजन में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान जोन थे, जबकि साउथ रीजन में कराची, हैदराबाद, सक्खर और जो बलोचिस्तान जोन अब ये इसमें शामिल कर दिए गए हैं। FIA में ये जो 2 नए जोन कायम किए गए हैं, एक जोन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जोन, जबकि दूसरा सक्खर जोन जो है इसको बनाया गया है ताकि इस हवाले से जो कार्रवाइयां की जाती हैं ह्यूमन स्मगलिंग की, उस पर काबू पाया जा सके और मौसर तरीके से कार्रवाइयां अमल में लाई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर। लाहौर में AVLC इकबाल टाउन का सांदा में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया मुलजिम अशरफ फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया है। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। तो ये अहम खबर आ रही है लाहौर में, जहां AVLC इकबाल टाउन का सांदा में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया मुलजिम अशरफ फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जी जहांगीर, बताइए। अभी AVLC इकबाल टाउन का यह मुबैना मुकाबला है जो कि सांदा के इलाके में हुआ है और पुलिस का ये दावा है कि एक मुलजिम जो है वो इसमें हलाक हुआ, जबकि एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। हलाक मुलजिम की शिनाख्त अशरफ के नाम से हुई है और पुलिस का ये कहना है कि चंद रोज कबल इसके साथ ही जो है उसको पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर फरार हुए थे। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस दौरान जो है वो 2 तरफा फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है और मुलजिम के बारे में पुलिस का ये दावा है कि दर्जनों वारदातों में ये मतलूब था। जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में दौरान डकैती शहरी को कत्ल करने वाले 2 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। पीपल्स कॉलोनी में चंद रोज कबल शाहिद इकबाल नामी शहरी को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया था। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइए। बिल्कुल, कुछ रोज कबल पीपल्स कॉलोनी के इलाके में शाहिद इकबाल नामी शख्स को डकैती के दौरान कत्ल करने वाले 2 जो डाकू हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है मारे गए हैं। CCD और थाना सदर की पुलिस ने ये मुबैना पुलिस मुकाबला किया है। सेंसरा गुराया के इलाके में CCD के मुताबिक मुलजमान को जो है रोका गया तो साथियों की जानिब से फायरिंग कर दी गई। इसी दौरान जो है इनके साथियों की फायरिंग से ही दोनों जो है वो हलाक हो गए हैं। इस बारे में ये भी बताया गया है कि जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। Few दोस्तों, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. Just a few minutes ago, we inaugurated the newly renovated Consular Services area at the Consulate General of Pakistan in New York. This building has stood for years as a home to our community, which has now been given a new lease of life. With this renovation, we reaffirm the simple principle: our missions around the world exist to serve Pakistanis abroad with dignity, efficiency and the best possible services.
Ladies and gentlemen, our government places overseas Pakistanis at the heart of its agenda. You are our pride abroad, partners in development, and ambassadors of our great country. That is why we are forced and focused on resolving your problems and improving services for you, both at home and abroad. Ladies and gentlemen, one of the most important reforms is for the provision of speedy justice, as explained by Honorary Consul General under the establishment of special courts, Overseas Pakistani Property Act, which is a law enacted by the Parliament. Special courts have been established to deliver swift justice in property disputes for overseas Pakistanis. These courts will allow evidence to be recorded through video link from missions abroad, so you will not have to travel back to Pakistan to participate and follow your litigation. This law also permits electronic filing of petitions and required documents. These changes would bring relief to many families who have experienced slow and expensive litigations in the past. Ladies and gentlemen, the government has also announced and started implementing other incentives. Overseas Pakistanis are now to be treated as filers by the Federal Board of Revenue, simplifying banking and business transactions. Quotas have been reserved for your children in federal universities and medical colleges. Additionally, special facilitation offices have been established by boards of revenue in Punjab and Balochistan to address your concerns with fitting and in a local manner. The Green Channel facility at airport, which was introduced by PML government years ago, has been revived to make your entry and exit in Pakistan smoother. The government has introduced a visa prior to arrival (VPA) category for citizens of 126 countries, aiming to ease travel for business and tourism purposes from these countries. Ladies and gentlemen, these are not promises for the future. These are the steps already under implementation at the direction of Prime Minister Mia Mohammad Shahbaz Sharif. Our government will continue serving you all as you deserve services that match your contributions to Pakistan. If you recall, there were 18 directives which at an overseas convention a few months ago, Prime Minister announced 18 directives, and I'm personally overviewing the progress of those directives, and most of these are either near completion or already been implemented. And these few I just counted are included in those 18 directives or 18 facilitation orders which Prime Minister announced at the Pakistani Diaspora Overseas Convention in Islamabad a few months back. To our community, I would say, your remittances sustain families, your investments create industries, and your voice strengthens Pakistan's standing in the world. You're all ambassadors of Pakistan wherever you are serving, living, or doing your business. Excellencies, ladies and gentlemen, our missions around the world are working tirelessly to bring the reforms of our government closer to you. In New York, as we renovate this consulate space and many more across the globe in our missions abroad, we also aim to align with national reforms in legal facilitation, service delivery, and digital access. I wish to commend the Consul General and his team for his challenging rehabilitation inside a historic structure while keeping essential services available. What once was underutilized has now become a modern, dignified facility. Ladies and gentlemen, one of the most important objectives of our missions abroad is to serve our brethren Pakistanis wherever they live. With Allah's grace, with the support of our leadership, and with your trust,
We will, inshallah, continue to serve all Pakistani diaspora better. The Foreign Office is working day and night and is at your service to make sure that the facilities which you deserve are available at the doorstep. Thank you very much.